On 11th of December 1992, the Government of India consented to the Convention on the Rights of the Child, adopted by the General Assembly of the United Nations on 20th November 1989, which advocated a set of standards to be followed by all the member nations in securing the best interests of the child. Bearing in mind the standards prescribed in the said convention, the Indian Parliament initially passed the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000. Subsequently, it was deemed expedient to reenact the said Act of 2000 to make a comprehensive set of provisions for children alleged and found to be in conflict with law and children in need of care and protection, taking into consideration the standards prescribed in the Convention on the Rights of Child, the United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice, 1985, the United Nations Rules for Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty, 1990, the Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in Respect of Inter-Country Adoption, 1993, and other related international instruments. Hence, the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 was passed by the Parliament in December 2015. We Indians are commemorating our journey of 75 years of independence, and Sansad TV is playing a meaningful role by dedicating a series titled 75 Years Laws That Shaped India. I'm your host Hemant Batra, bringing to you another episode in that exclusive series. Today we are going to discuss the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. In short, the Juvenile Justice Act. To talk about this very significant legislation, we have with us a very knowledgeable expert panel. We are joined by Shri Priyank Kanoongo, Chairperson of National Commission for Protection of Child Rights. Under his dynamic leadership, the Commission is playing an effective role towards attainment of objectives of the Juvenile Justice Act and several other connected laws. Welcome to Sansad TV, Priyank ji. In this discussion, we are also joined by Shri Ravi Kant, who is a lawyer by profession and founder of Shakti Vahini, a leading NGO on combating human trafficking. Presently, he is associated with Kailash Satyarthi Children Foundation as India Head, Access to Justice. Welcome, Ravi ji. Welcome to Sansad TV. So let us commence our conversation for today's episode. प्रियंक जी, मैं ये चर्चा आपसे आरंभ करना चाहूँगा। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये जो अधिनियम है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसे हम कहते हैं, ये भारत में कानून के साथ उल्लंघन में पाए गए बच्चे, उनके बारे में है। ये उनकी सुरक्षा और उनकी देखभाल के बारे में है, रिहैबिलिटेशन, एडॉप्शन आदि आदि। और कई कानूनी विशेषज्ञों ने और पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने बोला है कि ये एक लैंडमार्क लॉ है। आप क्या समझते हैं कि ये जो कानून है, ये जो अधिनियम है, ये वाकई में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है? देखिए, ये महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दोनों हैं। और अगर हम जे एक्ट की बात करते हैं तो ये अपने आप में 4 अलग अलग कानूनों का समुच्चय है। ये अपने आप में 4 अलग अलग कानून को हम एक जगह रख दें, ऐसा है। देखिए, एक तरफ ये एक्ट बात करता है उन बच्चों की जो विधि बाधित हैं, जिनसे किसी कारण से कानून का उल्लंघन हो गया है, उनको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, उसका प्रोसेस पूरा बताना है। दूसरी तरफ ये बात करता है उन संस्थाओं की जहाँ बच्चों को रखा जाता है, जिन्हें हम ऑर्फनेज कहते हैं, चिल्ड्रन होम कहते हैं, कि उनका किस तरह व्यवस्थापन होगा, उसकी पूरी व्यवस्था की बात करता है। तीसरी तरफ ये कानून जो है वो बात करता है
देखभाल एवं मदद की ज़रूरत वाले बच्चे, उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, चाहे वो ऑर्फन है या माता पिता देखभाल करने में अक्षम है जी, किसी नेचुरल क्लेमिटी से प्रभावित है, अलग अलग प्रकार से उनकी देखरेख देश किस प्रकार करेगा, ये उसकी बात करता है। और चौथा जो भाग है इसका वो एडॉप्शन है, वो एडॉप्शन को रेगुलेट करने की बात करता है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि हमारी जिन परंपराओं को गुलामी के दौर में भ्रमित किया गया, ख़त्म किया गया, उनकी पुनर्स्थापना की बात ये कानून करता है। आपको याद होगा 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसमें हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के योगदान को सबने पढ़ा है। बिल्कुल। उनके गोद लिए हुए पुत्र को जब ब्रिटिशर्स ने उनके जो अधिकार थे वो देने से मना कर दिया तो रानी तलवार लेके कूद पड़ी अपने पुत्र के अधिकार के लिए और उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। बिल्कुल। ये कानून एडॉप्टेड बच्चों के अधिकार संरक्षित करने की बात करता है, एडॉप्शन की प्रक्रिया निर्धारित करने की बात करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया में अपनी तरीके का ये पहला और इकलौता कानून है जो 4 अलग अलग कानूनों की बात करता है। हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के तहत इस पे काम करते हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा आगे बात यह है कि भारत के संविधान ने बच्चों को जितने अधिकार दिए हैं, जितने भी, उन सभी को ये एक कानून ऐसा है जो एक साथ समाहित करने की बात करता है। चाहे वो शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो पारिवारिक माहौल में पलने बढ़ने का अधिकार हो, चाहे विशेष उपबंधों के माध्यम से बच्चों के संरक्षण का अधिकार हो। आर्टिकल 39, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 15, आर्टिकल 39, 45, 47 जितने भी संवैधानिक प्रावधान है और उनके लिए जो भी अलग अलग कानून भी अलग हैं, तो उनको एक जगह समाहित करके कन्वर्जेंस एस्टेब्लिश ये करता है। चाहे आप स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात करें, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जो स्ट्रीट चिल्ड्रन की समस्या को ना केवल पॉलिसी के रूप में, एसओपी के रूप में और एक कानूनन जामे के माध्यम से सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ा। बहुत दुनिया का इकलौता देश भारत। एक्सप्लेन किया आपने ये किशोर न्याय अधिनियम उसकी रीढ़ की हड्डी। बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हमारे दर्शकों के लिए। ये आई थिंक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो आपने सामने रखी, जो एक्ट से बेयर एक्ट से निकल के नहीं आती, पर एक बैकड्रॉप जो आपने दिया बहुत महत्वपूर्ण। रवि जी, आई एम slightly confused about one aspect of this legislation. I would really appreciate if you could sort of explain and clarify that confusion. There already existed Juvenile Justice Act in 2010. That law was passed in 2000. I beg your pardon. Yes. In the year 2000. It was a comprehensive law. Then why a need was felt to pass or reenact or substitute this current law which we are debating or discussing in the year 2015? Why this law had to be passed? Was it because most of the conventions were taken care of, international conventions were taken care of in the 2000 Act? Was it the Nirbhaya case which sort of triggered this legislation? If you could explain. Various situations actually created this. The law provides protection to child in need of care and protection. Child in conflict with law. Children are a huge population in India. We are a big country having lot of population. Lot of children numbers are huge. The issues related to children are huge. There are a lot of children who are in need of care and protection. Their issues were completely different. Then there were children who were in conflict with law, who were doing crimes or made to do crimes. And there are various other children on whom crimes are happening. So it's a very, very diverse group. And the law is evolving because it takes care of children, and children issues are evolving. Like that before in 2000 we could not talk about online crimes. Now the law has evolved. Correct. Because there are new crimes happening. So in 2015, of course, the Nirbhaya case did trigger it, but the government took care of all aspects of the children issues, right. and together with it, it also dealt with a very complex issue. It brought in new crimes against children, better provisions for child care protection,
you know, better supervision of child welfare committees and various institutions created. And then it also brought this, you know, important thing, which of course the Supreme Court had decided, that it is the legislature which has to take the final call in the group of 16 to 18, in which children can do this, you know, crimes, where the level of maturity and what can be the process and whether they can be tried as an adult. So these were all the backdrop. Yeah, that aspect was missing in the 2015. Yeah, correct. But it came with lot of, you know, better provisions, and you have to also understand that it's not only a substantial law, it's a procedural law. Right. And therefore, everything which needs to be done with children has to be done with. It has more than 100 sections. Yes, it is it's a procedural law. Yeah, also. it is a procedural. प्रियंक जी, इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्द भी हैं जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, उसका क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है. ये जुवेनाइल और चाइल्ड जो है, इससे हमारा क्या मतलब है इन टर्म्स ऑफ दिस एक्ट, और ये जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, मतलब कानून के उल्लंघन में जो बच्चे उलझे हैं, वो उसका क्या मतलब है, और वो कौन से बच्चे हैं जिनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो डेफिनेशन भी अगर आप हमको कुछ बता सकें उसके बारे में. देखिए, डेफिनेटली मैं आपको ये बताता हूँ कि किशोर न्याय अधिनियम बच्चों को किस तरीके से परिभाषित करता है. मैं पहले धृष्टता करूंगा, लेकिन रवि कांत जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा. बिल्कुल. 2015 में कानून बदलने की सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट घटना हुई, और उसमें एक जो महत्वपूर्ण बात हम लोग छोड़ देते हैं, वो ये है कि सरकार देश की दिशा और दशा बदलने की तरफ बहुत तेज़ी से काम कर रही थी, और इसलिए 2047 का भारत जब हम बनाने की बात करते हैं, तो बच्चे आज किस तरीके से उनकी देखरेख की जाएगी, वही 2047 में भविष्य को तय करेंगे. खैर, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ वो बच्चे हैं जो किसी कारण से कानून के संपर्क में आए, उनसे कोई कानून टूट गया है. ठीक है. और इन बच्चों को एक प्रोसीजर के तहत समाज में पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया का निर्धारण ये किशोर न्याय अधिनियम करता है. तो और बच्चा क्या होगा, किस उम्र तक? बच्चा 18 तक है. अच्छा, 18 से ऊपर है तो बच्चा नहीं है, 18 से नीचे है तो बच्चा है. हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि 16 के नीचे. देखिए, ऐसा है कि अगर 16 से 18 में वो कोई हीनियस क्राइम कर रहा है, अच्छा, वो बलात्कार कर रहा है, हत्या कर रहा है, और उसकी उम्र 16 से 18 है, तो किशोर न्याय बोर्ड के पास ये अधिकार है कि वो ये तय कर सके कि इसके ऊपर एक एडल्ट की तरह मुकदमा चलेगा. अच्छा, ठीक है. या एक बालक की तरह. 16 और 18 के बीच में अगर वो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है, तो बोर्ड के पास ये अधिकार है कि वो उसको किस तरीके से ट्रायल किया जाना चाहिए. ठीक है जी. लेकिन जे एक्ट की परिभाषा में 18 साल तक ही बच्चे की परिभाषा, और 18 तक वो बच्चा है. ठीक है. मदद एवं देखभाल की जरूरत में ऑर्फन, अबेंडन, सरेंडर्ड, या वो बच्चे जिनके माता पिता किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जो जानलेवा है, जैसे HIV एड्स है, या ऐसे बच्चे जिनके माता पिता उनकी देखरेख करने में अक्षम हैं, उनको छोड़ दिया है, या ऐसे बच्चे जिनको घर में प्रताड़ना मिल रही है, या ऐसे बच्चे जो लेबर की सिचुएशन में है, चाइल्ड लेबर की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो सड़कों पे हैं, ये सभी प्रकार के बच्चे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, जिनकी देखभाल के लिए पूरी व्यवस्थापन का काम जो है ये एक्ट करता है. बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया आपने. वेल, इट इज टाइम टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. प्लीज डोंट गो एनीवेयर, as we are getting back soon. Welcome back after the break. You're watching our special show on significant laws legislated during our journey of 75 years of independence. Today we are discussing a substantially important law, the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. A law which was brought about to offer to the children their basic needs through proper care, protection, improvement, treatment,
social reintegration by adopting a friendly approach in the adjudication and disposal of matters in the best interest of children and for their rehabilitation through institutional processes. There is a lot to discuss with our expert panelists, but let us first gather some insight from the parliamentary discussion of this law. The Juvenile Justice, Care and Protection of Children Bill 2015 was introduced on August 12, 2014 in the Lok Sabha by Union Women and Child Development Minister Maneka Gandhi. The said bill was debated and passed in the Lok Sabha on 7th May 2015 and Rajya Sabha on December 22, 2015. The bill then received the assent of the President of India on 31st December 2015 and the same was made effective on 15th January 2016 by way of notification in the Gazette of India dated 12th January 2016. Let us now view and hear some of the significant debates in the Parliament on the said Act. छोटे छोटे बालकों से मजदूरी करवाया जाता है, वहाँ वह अन्य लोगों के संपर्क में आता है जिसमें कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वहीं से बालक जघन्य अपराध के प्रति आकर्षित होते हैं. This nation through this bill has to send a message that yes, we believe in reform. I do not find reducing the age of 16 is illogical completely or unjustifiable completely. The law cannot be lopsided and ignore the rights of the victim. The suffering of the victim of a single heinous offence is equally worthy of action irrespective of the fact whether the offence was committed by a child or an adult. It was also highlighted that we need to look at the socio-economic background of children who commit heinous crimes. Ravi ji, I also want to ask you about a substantive question, though it is about the procedural law. What procedure is contemplated or prescribed under the Act with regard to children who are found to be or alleged to be in conflict with law? Especially any heinous offences. Yeah, that would be more relevant. Yeah. Though you can touch upon other offences as well. When children are in conflict with law, the law provides them the protection that they are basically children. Right. And it provides for the JJ board, Juvenile Justice Board, and law enforcement has a set of rules and procedures in place where they will treat the child as a child and not as an accused, and they are produced before the Juvenile Justice Board. The JJ board has various procedures in which they decide, and mostly children, if you know, they are sent to observation homes. The homes are known as observation homes. Right. In terms of children who are in conflict with law, especially in terms of heinous offences, there has been, due to the 2015 law now, there is a process which triggers into motion, and even if the police has, you know, has detained them and as an accused, they will treat them as a minor. They will provide them all the facilities as a minor, and it will be the magistrate who is advised by a board of psychologists and social workers and all of them, who together decide the maturity level of the child, the understanding of the child, and the intention, intent, maturity and everything, they decide. And then after that procedure has taken place and they come to a conclusion, then only they decide that whether the child has to be treated as an adult if they are in the age range of 16 to 18. So automatically it will not be treated as an adult. There is a set procedure, and the law is very clear that it is more tilted towards children. So if a child who is between 16 to 18 and doesn't understand the maturity and does not have maturity level and does not have so much understanding, might be the committee might leave them. Right. So it has got more of a technical aspect than the legal aspect, because obviously they'll be examined by medical professionals. It's all about mental health and children issues, all of that. Right. So the law, as I said, is completely tilted towards children. Right. Even in that category. Right. Well explained. Priyank ji, you are chairperson of National Commission for Protection of Child Rights. आप इसके अध्यक्ष हैं इस आयोग के. इस आयोग की क्या
एक स्पेसिफिक भूमिका है जो ये प्रावधान हैं इस एक्ट के अंदर, उसके संबंध में आपका आयोग क्या रोल प्ले करता है? With reference to Juvenile Justice Act, NCPCR is mandated to monitor the implementation of the said act. Also, we worked as the grievance redressal authority. The grievance. सॉरी, आपको इंटरजेक्ट करना चाहूँगा, सारे स्टेट्स में भी सिर्फ पैन इंडिया इस एक्ट की निगरानी करने का काम आयोग के पास है। आयोग इस बारे में सरकार को विभिन्न एस्पेक्ट्स पर अपनी रिपोर्ट देती है, अपनी रिकमेंडेशन देता है। हम न्यायालय को भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को करते हैं, विभिन्न उच्च न्यायालयों को करते हैं और उसके आधार पे बदलाव होते हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि 2015 के एक्ट में 2021 में बदलाव आया। अब देखिए आप, ये पूरे की पूरी पार्लियामेंट की एक सदाशयता और सरकार की इच्छा शक्ति की बात है। 2016 में जो कानून लागू होता है, सरकार 2021 में उसमें बदलाव भी लेके आती है। 2021 में अमेंडमेंट हुई और वो अमेंडमेंट इस बात की हुई कि अडॉप्शन को और सरलीकृत किया जाए, बच्चे वेट ना करें गोद जाने की, डिले बहुत थी, डिले ना करें। और 2022 में इससे संबंधित सभी रूल्स को और रेगुलेशंस को पूरा नवीनीकरण किया गया है। और आप देखेंगे उसमें आपकी भूमिका थी वो सारी अमेंडमेंट लाने। देखिए, सभी जो सरकार के अंग होते हैं, सभी जो एक्ट से जुड़े स्टेक होल्डर हैं, अपना अपना काम करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, आज की तारीख में भारत जिस तरह बढ़ चला है, जो भारत सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री जी का अभी जो विजन है कि 2047 में भारत कैसा होगा, मैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से ये बात बोल सकता हूँ कि 2047 में भारत एक ऐसा भारत होगा जहाँ अनाथ आश्रमों में बच्चे नहीं पलेंगे, जहाँ हर बच्चा परिवार में पल के बड़ा होगा। ये इस एक्ट उस सफलता की तरफ बढ़ रहा है, बहुत उस तरफ बढ़ रहा है। बहुत मैं आपको यहाँ स्टेटमेंट है आपकी। ये बताना चाहूँगा जो कमीशन के रोल के बारे में, केवल एक एक्टिविटी बताऊँगा। हम बहुत सारा काम करते हैं, हम स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए काम करते हैं, हम चाइल्ड लेबर के लिए काम करते हैं, हम पॉक्सो के जो बच्चे विक्टिम्स हैं उनके लिए काम करते हैं। हमने एक्ट का कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ा, हम जिस पर काम करते हो। ये कमीशन 2018 में जहाँ साल में 3-4 हज़ार कंप्लेंट्स का निवारण करता था, आज 50,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स का निवारण करता है। हम बच्चों के बीच में जाते हैं, अपनी बेंचेस लगाते हैं। लेकिन जो सिग्निफिकेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोविड की महामारी के दौरान मार्च 2020 से आज तक किसी भी कारण से, ज़रूरी नहीं कि कोविड के कारण हो, किसी भी कारण से जो बच्चे अनाथ हुए या जिन बच्चों के घर में परिवार में कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हुई है, उनकी चिंता करने का काम आयोग एक पोर्टल के माध्यम से करता है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि वो परिवारों में रहे। विभिन्न राज्य सरकारों ने अपनी स्कीम्स में बदलाव किया है, भारत सरकार ने अपनी स्कीम में बदलाव किया और परिवारों के अंदर जो एक्सटेंडेड फैमिली या इमीडिएट फैमिली बच्चे का पालन पोषण करती है, एकल माँ है बच्चे का पालन पोषण करती है, उनको वहीं आर्थिक सहायता दी जा रही है। हम डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, हम अपनी परंपराओं की तरफ लौट रहे हैं। मैं आखिर में आपको बस एक बात बताऊंगा, हम जिन बच्चों की बात करते हैं CNCP, जो किसी कानून से प्रभावित हों, जो जिनके साथ कोई अपराध घटित हो गया हो या जो अबेंडन्ड हो, तो भारत का नाम जिन सम्राट भरत के नाम पर रखा गया, उनके पिता ने उनको और उनकी माँ को अबेंडन्ड कर दिया था। एक आश्रम में पल रहे थे, उस आश्रम ने, उस ऋषि ने उनको उनके माता पिता से दोबारा मिलवाया, पूरी फैमिली को दोबारा एक साथ किया और वो सम्राट भरत भारत के सम्राट बने, जिनके नाम पे भारत के नाम पे आज भारत, हमारा भारतवर्ष देश का नाम है। तो ये भारत की परंपरा है, परिवार केंद्रित व्यवस्था की तरफ ये एक्ट हमको ले जाने की बात अब करता है। तो ये ट्रूली ऐतिहासिक लॉ है, ये तो प्रूव हो गया है आज इस डिस्कशन में। Ravi ji, asking you last question before we move on to the viewer question segment. Would you like to share with our audiences and viewers any of the significant judicial precedents passed by the Supreme Court or any High Court for that matter? So one of the most landmark judgment which had a big impact on Juvenile Justice Act was Sheila versus Union of India, which talked about children in jails. And moving onwards, the Supreme Court has come with several, landmark judgment, but one of the most important has been Sampurna Behurua versus Union of India, which talks about, monitoring of various institutions, in which NCPCR also has a big role. So, monitoring of Child Welfare Committee and the Child Protection Commissions,
the child protection budgetary provisions for children, and appointment of juvenile police officers. So the entire, monitoring of the JJ Act and various provisions which has to be created is being dealt in Sampurna Vehrua versus Union of India, which is one of the landmark judgment in which state governments are also, mandated to do a lot of things, and it creates much bigger mandate for the NCPCR also, because it's a national apex quasi-judicial body, which so that judgment has had a big impact on the implementation of the various, institutional framework to implement this law. That's definitely a very relevant judgment which you have cited. Well, it is time to take the viewer's question. The question is from Chandni Dhawan from Delhi. Let us listen in. Can a 10-year-old go to jail if they have committed a theft along with 2 adults? Can a 10-year-old go to jail who committed a theft along with 2 adults? No. No. Because the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act, as I had said earlier also, provides entire complete protection, even if children who have committed crime. Because, and in this case, because the child is being accompanied by 2 adults, does not mean that the child will be prosecuted or will be named in the FIR also. Even his name will also be, kept, it will not be publicized or into the records, criminal records. The law provides complete protection to children. And therefore, there is a set process under which the child will be dealt, and during the entire process which the law will take its own toll, the child will be treated as a child. So he will not go to jail? No, nowhere. Unless he is above 16 or above, 16 to 18. And the juvenile board sort of... And the juvenile board... Provided it qualifies as a heinous crime? Yes, if it is a heinous crime, then also the child is provided protection, and it is only the board which decides that the child has that maturity level or the intent, and then also, they will there also there even is a burden of proof. There is a leeway that might be the child might be... Yes. But in that case also child will not go to the jail. Yes. Will go to some correctional center. Yes. Right. Well, there is a serious need to ponder why some children turn to crime at all. Undoubtedly, children who do get into crime should be held accountable depending on the circumstances. But their rehabilitation and restoration are paramount significance to ensure that they do not become potential threats or burdens to the society. On that note, let me thank our guests. Thank you, Priyank ji. Thank you so much. Thank you, Ravi ji. Thank you so much for joining us and enlightening us about this such an important landmark and historical law. Well, that's all we have in this edition of the program. You can also connect with us on various other social media platforms. Thank you for watching. Goodbye and namaskar.